Good morning, viewers again, dear students and viewers. Basics with you all. English grammar basic में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरे को जो जो टॉपिक्स आपके लिए suitable लग रहे हैं those topics I am picking up for all of you. So when you are preparing for competition exams, very small things are there which confuse you. These things need to be avoided and they can only be done with the help of basic grammar. बार बार मैं आपको ये बात याद दिलाती हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में, चैलेंजेस आपको फेस करनी है लाइफ में, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंडली एटीट्यूड विद दिस लैंग्वेज इज अ मस्ट. अगर आप इससे अपना नाता बना के रखते हैं और अपने आप को सक्षम कर लेते हैं स्पोकन इंग्लिश में विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स इन ग्रामर एंड अदर कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो देयर, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके कंपटीशन के पेपर्स में जब एग्जाम्स में आती हैं तो आप लोग सोचते हो कि इसका बेसिक रूलिंग क्या है. तो वो मैं छोटी छोटी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी. डिफरेंस बिटवीन योर एंड योर, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, योर एंड योर, राइट. लेकिन इसका जो कंफ्यूजन होता है क्योंकि इनकी साउंड आइडेंटिकल है, एक जैसी साउंड है, इसलिए कंफ्यूजन होता है. तो इस कंफ्यूजन को आप कैसे क्लैरिफाई करोगे, कैसे आप दूर करोगे, इस चीज को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. एंड आई होप कि आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो you will be able to understand the difference between use of your and your, which sound identical but the basic difference is quite prominent when you're using it in language, both spoken and written. तो कॉम्पिटिशन्स में यही चीजें आपकी देखी जाती हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं. उस टाइम लगता है कि बोल तो हम रोज रहे हैं लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये दो वर्ड्स आपके साथ शेयर किए हैं और ऐसे ही आइडेंटिकल पेयर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके डेली रूटीन की जो स्पोकन लैंग्वेज है या आपकी स्पोकन इंग्लिश है उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपकी क्लियर होंगी. एंड बिलीव मी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ओके, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं. अब बहुत सारा एक चंक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मैं अगर दे दूं, बहुत ढेर सारा इंफॉर्मेशन, तो हो सकता है आप घबरा जाएं. इसलिए मैं आपकी घबराहट को दूर करने के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स पिकअप कर रही हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विद योर एंड योर. जब तक मैं शायद बात कर रही थी आपने कुछ पढ़ भी लिया होगा क्योंकि मैं नोट्स आपको साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरा होना ना होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, but what is important is your notes which you will be using it when you need the help. Okay, और जब आपके पास टाइम होगा तब भी आप सोचेंगे कि चलो आज नोट्स हम देख लेते हैं. So your and your are easy to confuse because they sound identical. ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि आवाज सेम है इसलिए इसमें कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है. So let's see how they are different. Your, you are. This is short form of you are. For example, you are rich now. You are rich now. जब आप बोलते हैं ये contractions है. Contractions means short form. Your is short form of you are. जब आप इसको expand करेंगे तो you और are आना चाहिए, तब आपका ये correct use माना जाएगा. ठीक है, तो you are here, you are rich. Now it is you are rich. तो your यहाँ पे you are में expand होना चाहिए. Okay, for example, you are rich now. Does she think you're happy? You're happy. You are happy. Now what is you are? Your. This is a possessive pronoun which shows belongingness. Okay, so your is to show something which belongs to you.
or is related to you. For example, your answer is correct. Here, answer belongs to you. Okay. So here your use is there. Okay. तो यहाँ पे आपका बिलोंगिंगनेस वाला योर आपने यूज किया है क्योंकि आपका आंसर आपको बिलोंग करता है. ये पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. योर आंसर इज करेक्ट. आंसर बिलोंग्स टू यू. योर अंकल हैज अ रोमन नोज. नाउ अंकल इज रिलेटेड टू यू. नाउ कमिंग टू मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो दोनों को मैंने अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशंस दिए हैं. तो योर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर. कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया स्क्वीज इन. यू आर, it has no other uses. This is a 100% rule. If you cannot expand it to you are in your sentence, then it is wrong. तो इस आप रूल को आपको याद रखना है कि अगर आपका your you are में नहीं expand हो रहा तो आपका आंसर इनकरेक्ट है. ठीक है. इतनी अंडरस्टैंडिंग जब आप लैंग्वेज से जुड़ते हो तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. ठीक है. Now coming to example sentences with your you are. The trouble with the rat race is that even if you win, you are still a rat. This expands to you are, so it is correct. Doing nothing is very hard to do. You never know when you are finished. This expands to you are, so it is correct. तो यहाँ पर भी क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है उसका you are में, इसलिए ये आपका यूज करेक्ट है. So let's move further. Please ask John to post the parcel when you are in Mumbai. Okay. Here also you are is expanded into you are. So this expands to you are, so it is correct. Now you said that you could not believe you are your ears. See the pronunciation. You are. Okay. So here this does not expand to you are. So it is wrong. यहाँ आपका possessive your आएगा. ठीक है. So it should be your. Belongs to you. Now your is a possessive determiner. Other possessive determiners are my, your, his, her, its, our and their. ये सारे possessive determiners हैं. तो इनकी कैटेगरी आप लोग determiners में पहले भी पढ़ चुके हो. And I have already uploaded one video on this topic. So your is used before a word of one of three reasons. ठीक है. ये belongingness show करता है, लेकिन ये तीन तरीके से आपका belongingness show करता है. To show it belongs to you. For example, your car, your arm, your dog. To show it is of you. Second use is to show it is of you. आपका है. ठीक है. पहले वाले में क्या था? ये आपको belong करता है. ये आपका है. ठीक है. और दूसरा है कि ये आपसे related है. To show it is of you. Your picture, your photograph, your portrait. All these are yours. It belongs to you. To show it is related to you. आपसे relation बनाने के लिए भी, आप बताने के लिए कि आपसे related है, तब भी हम your use करते हैं. For example, your uncle, your mother, your sibling. Here are some more examples sentences with your. Our expert will answer your questions about pensions and savings. तो यहाँ पे भी आपके questions, ठीक है, इस चीज को आपको समझना है. This means the questions belonging to you. Now pin your photograph to the top of the application. This means the photograph is of you. Okay. Sarah doesn't look like your sister. This means related to you. Belongingness show करता है. Simple words. Now avoid you are in formal writing. जो formal writings होती हैं, formal letters, formal invitation, formal हर चीज जो भी है जिसमें आपका मतलब एक फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं होता,
उसमें आप यू आर पूरा लिखिए, यू आर अवॉइड करिए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एज ए जनरल रूल, कॉन्ट्रैक्शंस फॉर एग्जांपल यू आर, इज नॉट, कैन नॉट, डू नॉट, इट्स आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग। ये आपको थंब रूल्स थोड़े से ध्यान में रखने हैं हमेशा। जब भी आपको कहा जाता है किसी इंटरव्यू में कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, तो उसमें आपको ये यू आर जो है उसको कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिखना। In official correspondence, the normal practice is to expand them to their full forms. If you always expand contractions, you will never make a mistake with you are or its two notorious grammar villains. इनको notorious grammar villains इसलिए कहा जाता है कि इनकी वजह से confusion create होता है और इनकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं. So they are naughty people. Okay. Now yours, not yours. कहाँ पे आपको use करना है? Remember one of these examples. Here are two witty examples with your and you are to help you remember how to use them. Okay. You are only as good as your last haircut. When you are 8 years old, nothing is your business. Okay. Belongingness, and here expansion. That is when you expand it to you are. Fine. So let's move ahead with you know, a big thank you, and I request all of you to please subscribe the channel to raise my morale, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप किसी को encourage करते हैं तो उसके अंदर जोश आ जाता है, फिर वो और मेहनत से काम करता है। तो आपको और अच्छे वीडियो अपलोड करने के लिए I request you to subscribe, like and share. So thank you very much for watching this video. All the best to all of you, those who are preparing for exams, for competition exams, or preparing for any kind of exam, and also preparing yourself for spoken English. I wish you all the best. So let us travel together. Dheere dheere, slowly we will win the race. So thank you very much. God bless you all. Have a nice day.